So you started with 545 is what you're saying, and then Yes, got sir. got to 725, which is an extraordinary score, and you can absolutely aim any scholarship also with that, not just an admission. So I'm a lawyer by profession. So I had especially too much difficulty on the quant side of things. I hadn't taken up maths for a very long while, Hmm. and I've been practicing for a while. So specifically, that was very difficult for me. And even after the quant thing, apart from the quant thing, I thought that I'd be very good with the verbal. But until I was made aware of the octave technique, Hmm. I figured that my score of 545 was so low because I did not know how to read through those things and properly analyze those things. So I guess I went from 545 to 725 in 6 months' time. It was all thanks to your techniques. And more important than the techniques I found was that the belief that you instilled in me and all your students that this can be done. That was the most important thing for me. I did not in my own self believe that I will be the person who will be joining a future webinar and I will be telling other people that Right. we can do this. आई नो सो This मेनी can पीपल, be done. मुझे कई बार बड़ी हंसी आती है सुन के। अब ऐसा नहीं, रॉन्ग सेंस में, कि यार कई लोग बोलते हैं कि आई वांट टू बी इन योर वेबिनार, लेट मी स्कोर एंड लेट मी कम, बट दैट्स गुड इफ इट वर्क्स एज मोटिवेशन, नथिंग नथिंग इज रॉन्ग इफ इट वर्क्स। तो थोड़ा बताइए, हाउ डिड यू एस क्वांट, बिकॉज बीइंग अ लॉयर, आई मीन यू आर नॉट इवन फ्रॉम प्योर कॉमर्स, फॉरगेट इंजीनियरिंग। सो हाउ डिड यू एस क्वांट, एंड कैन यू गिव सम टिप्स, प्रैक्टिकल टिप्स टू पीपल कि क्या करना चाहिए, क्योंकि क्वांट में बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, आप भी जानते हो, तो बताइए थोड़ा सा। सर क्वांट में मेरे साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पहले मैंने जो पहला अटेम्प्ट दिया था आई यूज टू डू इट इन द सेम मैनर जैसे मैं क्लास 12 तक करता था तो आई यूज टू सी अ क्वेश्चन एंड देन आई वुड ट्राई टू ट्रांसफर दैट क्वेश्चन इनटू सम न्यूमेरिकल टर्म्स कि अच्छा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और व्हाट इज इट आस्किंग सो आई यूज टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन ईच क्वेश्चन हम्म। फिर थ्रू इट टुक मी अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ पेशेंस की फिर मैंने आपको करते हुए बाकी सारे वीडियोस में भी देखा कि I don't have to focus on everything that is given in the question. I have to really focus down and pin down कि actually पूछ क्या रहे हैं और do I even need to pick up the pen for answering this? First of all, पहले तो मैं बिल्कुल ही वैसे करता था कि अच्छा like we used to do word problems in school कि okay this is given, this is given, this is हम given, लोग this तो is asked. क्वेश्चन भी लिख देते हैं स्कूल में, तो कि क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, तो या तो एकदम। या it used to be like that, but बहुत ज्यादा उस पे बार बार प्रैक्टिस किया एंड आई जब मैंने आई वाज प्रैक्टिसिंग तभी मुझे ये प्रॉब्लम होती थी कि आई फेल्ट लाइक इफ आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन तो मैं समझ नहीं रहा क्वेश्चन को हम्म। तो इट टुक मी अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ पहले वाली चीज को अनलर्न करना वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी और This is a वो mindset प्रैक्टिस किया also, that you have to challenge yourself not to write, not to do too much work, not to do. So I'm very glad you did. And DI may, what did you do? Because DI section is a nightmare for people, generally speaking. So what was your challenge, first of all? What did you do to, undo that challenge? And how did you सर eventually score? Yeah. सर द एंटायर challenge for me in the entire exam was being able to focus on what exactly the question is asking. मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता था कि ओके ये भी है ये भी है ये भी है आई मुझे मेरे लिए चैलेंज वही था कि आई एम नॉट एबल टू फोकस कि एक्चुअली पूछ क्या रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने वो ऑक्टेव वर्बल के लिए जब ऑक्टेव का प्रैक्टिस स्टार्ट किया और उसको अप्लाई करना स्टार्ट किया देन आई स्टार्टेड दैट ओपनड अप अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग फॉर मी कि okay there might be so many things given in the passage and there might be so many things given otherwise लेकिन मुझे किन चीजों पे फोकस करना है तो वो क्वांट का लर्निंग हेल्प मी इन जो वो वर्बल का लर्निंग हेल्प मी इन क्वांट एंड इट आल्सो हेल्प मी विद द डीआई सेक्शन एज वेल कि एक्चुअली पूछ क्या रहे हैं दैट फोकस दैट क्रिस्टल क्लियर फोकस कि okay there even in the question even if testing conditions are different I get that लेकिन मैं I was getting too panicky first of all लेकिन फिर प्रैक्टिस करते 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 I got to a point where I could see through the question and I was able to focus कि अच्छा ये पूछ रहे हैं ये आंसर है it and I attended one of your other webinars and I saw and I actually realized that कि उतना टाइम होता है it's just me making my time or make my time management worse if I'm not able to do Right. that. Right. सो आई जस्ट समराइज, बिकॉज थोड़ा सा आपने जो बोला है, थोड़ा सा मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ ऑडियंस के लिए हमारे। द वन थिंग दैट इज, देयर इज अ dense jungle of information in DI, and a lot of it is not necessary. You have to become pinpointed. You can become pinpointed by being very good at RC and CR,
And most people don't relate कि RC अच्छा है तो DI कैसे अच्छा हो जाएगा. But trust me, if your RC and CR instincts become very good, you will automatically take those to the DI section. So become pinpointed. That's why the technique in SPAR, I always say first thing is skim. A lot of information is useless. A lot. Not skim in verbal, not in quant, but in DI you can actually skim a lot. So that's a great learning for everybody in case they want to implement. There's one more thing I want to ask. How did you use the portal resources and then how your exam actually turned out this time? थोड़ा बताइए क्योंकि अभी लिखा होगा आपने तो अभी स्कोर आया तो शायद कल कब कब दिया था एग्जाम 2-3 दिन पहले ही दिया था कल दिया कब नहीं, दिया दिया था एक हफ्ता हो गया, 1 वीक ओके हो ओके ग्रेट सो बताइए हाउ डिड यू यूज द पोर्टल रिसोर्सेज हाउ डिड दे हेल्प यू आरसी यू ऑलरेडी टोल्ड ऑक्टेव सो लेट मी नॉट रीट्रेट बिकॉज वो सभी लोग बोलते हैं मैं वो वाली चीज जानना चाहता हूँ जिससे एवरीबडी कैन बेनिफिट राइट सो या पोर्टल प्लस योर टेस्टिंग एक्सपीरियंस So, sir, portal was specifically helpful to me in 2 ways. जितने भी टॉपिक वाइज थे, आई मेड श्योर कि किसी भी टॉपिक पे वो डेप्थ क्रिएट हो, वो टॉपिक के ऊपर मुझे पूरा होल्ड हो. इफ देयर आर क्वेश्चंस दैट आर 500 लेवल क्वेश्चंस और 700 लेवल क्वेश्चंस है अगर उस टॉपिक पे, तो आई मेड श्योर कि आई नो ईच क्वेश्चंस. और मेरा एरर लॉग शीट इन दिस हेल्प मी अ लॉट. कि आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन, देन आई यूज्ड टू मेंटेन दिस एरर लॉग. और उसके बाद जा जाके आई मेड श्योर दैट आई हैड दैट डेप्थ एंड दैट ग्रिप ऑन एवरी टॉपिक. Apart from that, sir, portal also helped me with easing with the exam process. मैं portal पे भी I used to give full mock test. पूरा 4 or 5 I gave कि I get used to, because first जब पहला एग्जाम में I gave तो उसमें मैं काफी टाइम बाद एग्जाम दे रहा था तो मैं थोड़ा फ्लस्टर्ड हो जाता था. एंड आई यूज्ड टू बी कि ओके, अभी तो करना है बहुत प्रेशर फील करता था. लेकिन वो प्रेशर को यूज करने के लिए पोर्टल को मैंने बहुत ज्यादा यूज किया और उसको ईज में ले आया. गिविंग एन एग्जाम, गिविंग द जीमैट वुड वाज लाइक अनदर मॉक सेशन फॉर मी. राइट Also, did you find something unusual on the exam and what were your percentiles in each? मैंने अभी वो report नहीं देखी है. I've been given, but I'm here, so I'm not checking my phone for the report. But first of all, what was the order, and did you find something genuinely unusual on the exam? Please. So to be honest, the order was first I gave Quant, then DI, and then वो uh, verb address. ठीक है. Uh, Apart from that, sir, I genuinely did not feel a very difficult thing for the exam because I was in that zone. I had practiced a lot to be that calm in those 2.5 hours, that I could not be bothered. I was at peace. I was completely focused on what was there on the screen, what I need to answer. So the exam session was not really that difficult for me. It was a little difficult in the sense that for my first attempt, I went to the center, and for the second attempt, I was giving it online. So the process before starting online, that I had to showcase them around, that was a little challenging for me because that threw me off a little bit. So you were not looking at Indian school because ISB ने बोला है कि सेंटर एग्जाम ही लेंगे तो आपने शायद ऑनलाइन सोच के दिया था ना कि बाहर ही जाना है फिर आपको कुछ ऐसा. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Superb, Shreyas. We will continue this conversation in one more interview because I have to carry on with the session. But I'm so happy. Thank you for joining. Thank you very Thank much. you, sir. Thank you, sir. So Thank you for